Hello students, next state management topic is server side state management option और उसके अंदर हम लर्न करने वाले हैं session state. Yes, session is what? Session is state is used to store session specific information for a website. Unlike application state, the scope of the session is limited to the current browser session, or we can say this one is advantage also. If different users are accessing a web application, each will have a different session state. In addition, if user exists and returns later, the user will have a different session state. Yes. So means what? Basically, session state क्या है? It is session specific information store करता है session state. Yes, for a website. और वी कैन से हर एक यूजर का अलग अलग सेशन स्टेट होगा. यूजर यानी कि क्या? ब्राउजर. हर एक ब्राउजर का अलग अलग सेशन स्टेट होगा. फॉर एग्जांपल, इफ यू लॉग इन विद द क्रोम ब्राउजर देन अलग सेशन क्रिएट होगा. इफ यू लॉग इन विद द मोजिला देन डिफरेंट सेशन आईडी विल बी क्रिएटेड. फॉर ईच यूजर ब्राउजर सेपरेट सेशन आईडी विल बी क्रिएटेड. यस, और वी कैन से एक ही ब्राउजर के अंदर अभी तो मल्टीपल सेशन क्रिएट हो सकते हैं. दैट विल बी अलाउड. यस, सो बेस्ड ऑन दैट रिक्वेस्ट सर्वर विल बी आइडेंटिफाई कि अभी किसको रिस्पॉन्स देना है या कौन से ब्राउजर को रिस्पॉन्स देना है. यस, फॉर अ पर्टिकुलर सेशन. We have a two event, session on start and session on end event by the in the global file. global.asax फाइल के अंदर दो इवेंट्स अवेलेबल होते हैं, सेशन ऑन स्टार्ट एंड सेशन ऑन एंड. फॉर ईच एंड एवरी सेशन वी हैव a 120-bit session ID. Yes, containing the ASCII characters, identifies and track active ASP.NET session. For example, if you want to store the value inside the session, you can write down session in bracket double quotes variable name is equal to double quotes के अंदर value. Yes, यहाँ पर myvar मैंने लिया है और उसका वैल्यू क्या है? hello. सेम वे अगर आपको वैल्यू को रिट्राइव करना है देन यू कैन राइट response.write ब्रैकेट के अंदर session myvar. Yes, so this particular session value will be print. Yes, so we can say we can store the complex object inside the session. We can also store the serialized object inside the session. Okay, ये सब कुछ हम स्टोर कर सकते हैं. सेशन स्टेट का जो बाय डिफॉल्ट है वो 20 मिनट से ज्यादा नहीं होगा. यस, सो 20 मिनट्स के बाद सेशन अपने आप एक्सपायर्ड हो जाएगा. यस, बाय डिफॉल्ट एक्सपायर टाइम इज 20 मिनट्स. ओके, नाउ अगर आपको सेशन को रिमूव करना है देन वी कैन यूज द रिमूव ऑल मेथड. यस, तो सारे सेशन वेरिएबल रिमूव हो जाएंगे. अगर हमें स्पेसिफिक सेशन को रिमूव करना है देन वी यूज सेशन डॉट रिमूव ब्रैकेट के अंदर सेशन नेम. तो ये सारे सेशन को रिमूव कर देगा. यस, सो सेशन डॉट रिमूव ऑल एंड सेशन डॉट रिमूव. ओके, नाउ अगर हमें सेशन का सेशन आईडी जानना है देन वी कैन राइट सेशन डॉट सेशन आईडी. We can also use the abandon method to explicitly stop a user session. Yes, by using this line of code session dot abandon. Yes, okay, ये जो मैं सारी मेथड आपको बता रहा हूँ that you have to write inside the exam. Yes, ये सारी मेथड अगर आप एग्जाम में लिखोगे तभी मार्क्स मिलेंगे. So आपको क्या लिखना है? सेशन का डेफिनेशन लिखना है, देन सेशन का टाइम लिमिट कितना है वो लिखना है, देन यू हैव टू राइट द व्हाट वी कैन से सेशन को कैसे, सेशन के अंदर वैल्यू कैसे ऐड करेंगे, सेशन में से वैल्यू कैसे रिट्राइव करेंगे. यस, एंड यू कैन ऑल्सो राइट द for removing
the session values, and if you want to remove all the method or all the session variable, then you can use the remove all method, and you have to also write the abandon method. कि abandon method क्या करता है कि अगर सेशन ऑब्जेक्ट को एक्सप्लिसिटली स्टॉप करना है या यूजर का सेशन को स्टॉप करना है, देन वी हैव टू यूज द abandon method. ओके, सिंपली लॉग आउट कोड के अंदर हम सेशन डॉट abandon मेथड का ही यूज करते हैं. यस, सो ये जो 20 मिनट्स का टाइम है वो आप कहां पर सेट कर सकते हो? वेब डॉट कॉन्फ़िग के अंदर. और कौन से टैग के अंदर? सेशन स्टेट के अंदर. यस, तो आपको ये सेशन स्टेट चेंज करना पड़ेगा और उसके अंदर टाइम आउट करके प्रॉपर्टी होगी. सो यू हैव टू चेंज द टाइम आउट मिनट. यस, और ये जो ग्लोबल इवेंट मैंने जो बताई थी, ये इवेंट कब अकर होगा? जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तब, या जब इंडिविजुअल सेशन स्टार्ट होगा तब ये इवेंट अकर होगा, और जब भी हमारा सेशन एंड होगा तब, या इंडिविजुअल सेशन एंड होगा तब ये इवेंट अकर होगा. Now what are the advantage of the session? Session is secure and it can store the complex data. Yes, और we can simply use tracking के लिए अगर हमें यूजर को कोई वेरिएबल ऐड करना है, then we can use the session variable. It is more secure and more, or we can say most powerful variable. Yes, so these are the advantage. डिसएडवांटेज क्या है? इफ साइमल्टेनियसली मिलियन ऑफ यूजर आर कनेक्टेड देन सर्वर इज स्लो डाउन. अगर बहुत सारे यूजर कनेक्टेड हैं तो सर्वर क्या हो जाएगा? स्लो डाउन हो जाएगा. दैट वन इज द ओनली वन डिसएडवांटेज ऑफ द सेशन. आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू ऑल.